Wish you a very good morning, students. Today we are going to explain a new topic, and the name of the topic is active and passive voice, change of voice. It is also known by the name active voice and passive voice. Actually, a sentence or a verb can be said in active voice and in passive voice, in both the voices. Now, first of all, let us have an introduction of change of voice. What do you mean by active voice and what do you mean by passive voice? First of all, let us have a glance at the sentence Monu writes a story. And I can say the same thing by this sentence, a story is written by Monu. We can say the same thing in two ways. What does it mean? There is no change in the meaning. The change is the emphasis. Emphasis, where do we have emphasis in active voice and when the verb is in passive voice? Monu writes a story. Here Monu is subject, writes is verb, and a story is an object in this sentence. This is SVO pattern. Subject, verb, a story, action. This verb indicates or refers to an action of writing. Now, who writes? Monu writes. Means, in this way, action, subject is doing the action. In this way, means who is the doer of the action? Subject. When in a sentence, the subject and doer of the action is the same person or same thing, the verb is said to be in active voice. Monu writes a story. Who writes a story? Or Monu writes a story means Monu is the subject and Monu is the same person, means the doer of action too. But in the second sentence, a story is written by Monu. This is an agent. An agent. A story is written by Monu. Here, subject is a story. But story does not write a story. Means subject and doer of the action is not the same person. Doer of the action is Monu, who has been used as an object or as an agent in this sentence. When the subject and doer of the action is not the same person, then the verb is said to be in passive voice. But there is no change in the meaning. Both the sentences refer to same meaning. Now, first of all, doer of the action, the same subject. Subject is the same person as the doer of the action. But here, subject is not the doer of the action. Action is writing. And here, the subject is receiving the action. Who is subject? Here, subject is used, a story is used as a subject. But the action of writing is received by the subject, Monu. Here, action is done by the subject. Here, action is received by the subject. Now, or the doer of the action. In case of passive voice, Monu or the main subject of active voice becomes the recipient of the action of writing. And we use a preposition by before doer of the action or the subject. Second is, in case of active voice, when the verb is in active voice, action is done by the subject. Action is done by the subject. But in case of passive voice, action is received by the subject or by the agent of active voice.
action is done to the subject. In case of active voice, action is done by the subject, and here action is done to the subject. यहां पर action is done to the subject, हम ऐसा कह सकते हैं. In case of active voice, Monu writes a story. Here emphasis is on the subject. Who writes a story? Monu. This emphasis is here. Focus is on the subject. Means subject is more important than the object, a story, in case of active voice. But in case of passive voice, this a story becomes more important. Emphasis is on the story, which was the object of the active voice. Now it has become more important. If we want to make the object more important, if we want to emphasize the object of active voice, we change it into passive voice. A story is written by Monu. Here Monu is not much more important as compared to a story. It means action is important, not the doer of the action in case of passive voice. Now, we are habitual to use active voice while writing or speaking. But in case of passive voice, we use the passive form of verb or sentences much more less than active voice. Active voice is more natural way of writing and speaking as compared to passive voice. It is a natural way of writing, speaking. Again, sentences are short, sentences are simple and elegant in case of active voice. Its structure is usually SVO structure, subject, verb and object structure. But in case of passive voice, doer of the action is ignored and it is written at the end of the sentence after using a preposition by as an agent. Sentence becomes a little bit longer and its pattern is subject plus past participle after a helping verb with respect to the tense and by object, means by an agent. In this way, we can change active voice verbs into passive verbs and it brings a variety to the language. अब हम डिस्कस करेंगे why do we use passive voice. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखें, इनके रूल्स सीखें या पैसिव वॉइस को इस एक्टिव वॉइस में चेंज करना सीखें, आओ हम जानते हैं व्हाई डू वी नीड पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस की हमें जरूरत क्यों पड़ी जबकि एक्टिव वॉइस इज ए नेचुरल वे टू से समथिंग आइदर इन ए रिटन और स्पोकन फॉर्म. देन व्हाई डू वी नीड passive form of sentences or verbs? There are some reasons for which we use passive forms of verbs or sentences in passive voice. First of all, when the receiver of the action is more important than doer of the action. कई बार सिचुएशन इस प्रकार की होती है कि एक्शन को रिसीव करने वाला मीन्स ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से डूअर ऑफ एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ऐसी परिस्थिति में हम उस सेंटेंसेस को, उस स्टेटमेंट को, उस बात को पैसिव फॉर्म में कहना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा प्रभावी होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी वेलकम्ड द चीफ गेस्ट. अब यहां पर हु वेलकम्ड द चीफ गेस्ट? वी. आप ये देखिए यहां पर ये डूअर ऑफ द एक्शन वी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या द चीफ गेस्ट हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट. It's obvious. The chief guest is more important on that particular day. कोई भी फंक्शन है and the audience and all the organizers wait for the chief guest eagerly and they welcome him or her.
We welcomed the chief guest. Here chief guest is more important. So we shall write this sentence in passive form, not in active form. For example, the chief guest, यहां पर chief guest को हमने subject बना दिया. The chief guest was welcomed. This is more important. Chief guest is more important here. Who is the recipient of the action? Was welcomed. यहां पर by us is not much more important. यहां अगर हम by us को ignore भी कर दें, ना भी लिखें, it doesn't matter. The chief guest was welcomed with pomp and honor, pomp and show. Next sentence or next reason is, why do we use passive form? When the doer of the action is not known. Sometimes कोई ऐसा action होता है कि हमें उसके subject का या doer of the action का पता ही नहीं होता. For example, my car has been stolen. यहां पर someone stole my car. बाहर पार्क की हुई थी गली में और वहां से किसी ने रात को मेरी कार चोरी कर ली. अब किसने चोरी कर ली? This is not important. And what is important? कार का चोरी होना important है. ये घटना important है. My car has been stolen. इसको हम passive form में कहेंगे. If we want to lodge an FIR, किसका नाम लेंगे? किसी का नहीं. Doer of action is not important. क्या लिखेंगे हम? My car has been stolen last night. Next is the road has been dug up. हमने सुबह देखा कि हमारे पड़ोस से जो रोड गुजर रहा था, that has been dug up. Who dug up? We don't know. But असुविधा तो रोड के खुदने से लोगों को हुई. तो action is more important than the doer of the action. Who is the doer of the action? We don't know in these situations. So when doer of the action is not known to us, we express the things in passive voice. Next is, sometimes we know the doer of action, but we don't want to name. We don't want to refer to the doer of action. We don't want to indicate. There are certain situations in the society and we don't want to name him, a particular, a specific person. But at that time, action is more important. And we say such things in passive form. The complaint was lodged against the principal. Who lodged the complaint? We don't want to name that specific person. So we have said this thing in passive form. Sometimes we don't want to name the doer of the actions in our society. For example, someone has stolen my book today. Means who stole? मेरे ही किसी साथी ने चुराई होगी. Someone has stolen my book. Means my book has been stolen. हम नाम नहीं लेना चाहते. कई बार हमें पता भी होता है कि ये फला फला काम फला व्यक्ति ने किया है. But we don't want to refer to because we have not proof. At that time, we express such actions in passive voice. When action is more important than the doer of the action. कई बार ऐसा होता है कि action ज्यादा important होता है उसके doer से, doer of the action से. ऐसी परिस्थिति में हम केवल और केवल passive voice में लिखते हैं. Next is, for example, many flights have been cancelled due to fog. Who have cancelled? Who has cancelled the flights? It's not important. Of course, the flying officers. Of course, the Department of Air. But it is not important at that time. Many trains have been cancelled due to COVID-19. In this way, it is not important. So we say such actions, express such actions in passive voice only. Next is, passive voice brings a variety to the language. इससे language में variety आती है. And variety is liked by all. That is why we express the things in passive voice instead of active voice.
What are different uses of passive voice? We use passive voices in notice writing, हमें कोई नोटिस लिखना है, इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट्स लिखनी है, तो हम पैसिव फॉर्म में ही लिखते हैं, पैसिव वॉइस का यूज ज्यादा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस डे 2020 has been celebrated with pomp and show. Or notice writing, the school is going to organize so and so event. Next is news headlines. Most of the news headlines are written in either present simple tense or in passive form. For example, 2 terrorists were killed. आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में एक न्यूज हेडलाइन आती है, 2 terrorists were killed. News headlines are usually written in either simple present tense or passive voice. In this way, passive voice is very much important for a language learner. So, after knowing the importance of passive and active voice, we shall understand how to change active voice into passive voice in different tenses and different type of sentences. Students, अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को, एक्टिव वॉइस वर्ब्स को पैसिव वॉइस वर्ब्स में चेंज करेंगे. If we follow these 5 to 6 steps while transforming an active voice sentence into a passive voice sentence, we will be able to change active voice into passive voice. It is very easy. There are only 5 basic steps to follow the transformation of active voice into passive voice. Step number 1, find the doer of the action, means the subject. सबसे पहले आपको किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है. फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. इसमें आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है. आई इज द सब्जेक्ट हियर. नाउ फाइंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस. हु इज द रिसीवर? इंग्लिश. आई टीच इंग्लिश. I teach English. English is the receiver of English. What is taught? English. This is the object in the sentence. सबसे पहले आपको किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ एक्शन और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन सर्च करना है, फाइंड आउट करना है. सबसे बेसिक स्टेप और फर्स्ट स्टेप यही है. जब आपको ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल जाएं, step number 2, interchange the position of the doer and the receiver, means subject and object in the sentence. पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किए थे, अब पैसिव वॉइस में इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी. ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट आगे चला जाएगा. ये ऑब्जेक्ट नए पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब जो वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो इसके अनुसार यूज करेंगे, इस नए सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था. ये जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, इसको अब हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है पैसिव वॉइस का. ये यदि प्रोनाउन है तो हम इसका एक्यूजेटिव मीन्स ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यदि ये सब्जेक्ट में आई है तो मी हो जाएगा. अगर ये प्लूरल वी है, अस हो जाएगा. अगर ये यू है तो यू हो जाएगा, क्योंकि यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं. अगर ये थर्ड पर्सन ही है तो हिम हो जाएगा. शी होने पर हर हो जाएगा, और यदि दे है तो देम हो जाएगा. पैसिव वॉइस में हम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस यूज करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन थे एक्टिव वॉइस के केस में. दिस इज स्टेप नंबर 2. नाउ लेट अस कम टू स्टेप नंबर 3.
थर्ड स्टेप में ये जो नया सब्जेक्ट हमारा बना है, किसका? पैसिव वॉइस का, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट बना है। पहले ये वाली हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार थी, अब हमें ये पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज करनी है, और हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर देंगे, मींस V3 इन केस ऑफ पैसिव वॉइस। देखिए, एड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, जो टेंस है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, और वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगी नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर देखिए, इस एग्जांपल से स्टेप 1 में हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट किया, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया। स्टेप 2 में हमने इस ऑब्जेक्ट को नए सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया, इस सब्जेक्ट को हमने नए सेंटेंस का एजेंट मींस ऑब्जेक्ट बना दिया, और वो भी एक्यूजेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, I इंटू मी। अब हमें इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करते हुए। अब इसमें हमने टेंस देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई टीच इंग्लिश, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके लिए हम इज, एम, आर का यूज करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होंगी उसके लिए टेंस के मुताबिक। इंग्लिश इज, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, इंग्लिश इज मी। फोर्थ स्टेप में चेंज द वर्ब टू पास्ट पार्टिसिपल, चेंज द वर्ब इनटू V3। यहां पर वर्ब थी टीच, टीच, टॉट, टॉट, हमने इसको चेंज कर दिया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, इंग्लिश इज टॉट डैश मी। फिफ्थ स्टेप में ये जो डूअर ऑफ एक्शन मी है, इससे पहले हम एक प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, और वो प्रेपोजिशन यूजुअली बाय होती है, परंतु कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाय के साथ टू, इन, विद का यूज भी कर सकते हैं। उनको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यूजुअली वी यूज बाय टू कनेक्ट द ऑब्जेक्ट। Change the verb into past participle and use the preposition by, to, in or with before the agent to connect the object in case of passive voice. यहां इस प्रकार से हम लिख देंगे English is taught, हमने ऐड कर दिया इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए by से, by me. This is the passive form of this sentence in active voice. I teach English, English is taught by me. कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ध्यान रखना है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टेटमेंट है, सिंपल है, तो हम उसे स्टेटमेंट ही रखेंगे, अफर्मेटिव है अफर्मेटिव ही रखेंगे, असर्टिव है असर्टिव ही रखेंगे, नेगेटिव है नेगेटिव रखेंगे, इंटेरोगेटिव है इंटेरोगेटिव ही रखेंगे। और इंटेरोगेटिव में यूजुअली बच्चे गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। इंटेरोगेटिव में केवल एक बात का ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना है इन केस ऑफ पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। आइए एक बात और हम यहां ध्यान रखें, आपने प्रोनाउन के टॉपिक में सीखा था कि हाउ टू चेंज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। I, me, we, us, you, he, him, she, her, they, them, it, इस प्रकार से। अगर कोई नाम यहां सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट में कोई नाम है किसी का, तो हम उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, बाय लगाकर उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, एजेंट बना देंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस का। इस प्रकार से हम विभिन्न टेंसेस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फॉलो दीज रूल्स एंड चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, आइए हम सीखते हैं टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस को किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो रूल्स हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं,
उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए लेट अस लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. First of all, we are going to all the simple tenses of present, past and future. Simple present, simple past and simple future. You are well aware of the construction or structure of all the simple tenses. In case of statement, negative and interrogative. As we have discussed already, all the rules how to change active voice into passive voice, let us take a few examples and start changing active voice into passive voice. First of all, I write a poem. I write a poem. यहाँ पर I is the subject, write verb, a poem is an object. We have to give the importance to this object, a poem. So इस अ पोएम को हम यहां पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे. अ पोएम, चूंकि अ पोएम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर हमें टेंस देखना है. टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई के पश्चात V1 का यूज है. अ पोएम तो हम इज एम आर यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस न्यू सब्जेक्ट. अब न्यू सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम इज यूज करेंगे. अ पोएम इज और V3 ऑफ दिस वर्ब राइट इज रिटन बाय अपनी तरफ से यूज करेंगे एंड एजेंट इसका हम ऑब्जेक्टिव केस यहां यूज कर देंगे बाय मी. इस प्रकार से इस आई को हमने ऑब्जेक्टिव केस में यहां यूज किया है. तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था आई राइट अ पोएम and it will become a poem is written by me. This is the passive voice of this above sentence. Next is, अगर ये sentence interrogative हो, negative हो, तो passive voice भी interrogative और negative ही रहेगा. उसे हम statement में change नहीं कर सकते. यहां बच्चे कई बार confuse होते हैं क्योंकि reported speech में ऐसा करना होता है. Sometimes students get confused while changing voice and narrations. They also change the type of sentence. We do not need to change the type of sentence in case of voice. We just have to change the voice of the verb. Does he play chess? This is an interrogative sentence of simple present tense. In case of simple present tense, we find S after V1 or do or does as helping verbs. अगर हमें ये मिले किसी एक्टिव वॉइस में तो हम उसकी पहचान कर पाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में और उसको हम इज एम आर प्लस V3 से पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे. बाय प्लस एजेंट जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस को उसको हम पैसिव वॉइस का एजेंट बना देंगे. इसी प्रकार से जैसे देखिए डज ही प्ले चेस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट बिगिंस विद डज विच इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी शैल कीप इट इन इंटेरोगेटिव इन पैसिव वॉइस टू. नाउ does he play chess? This is the subject, this is verb and this is the chess is an object. We have to change its position. We shall change this object of active voice into the subject of passive voice and being it as the singular third person noun we shall use is with it, and in case of interrogative we use helping verb before the subject not after the subject. यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है. बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं क्योंकि वो चेस को यहां ले आते हैं. सबसे पहले लाना तो है लेकिन अगर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में हम इस सब्जेक्ट को
हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखेंगे, चाहे कोई भी टेंस हो। इस पॉइंट को आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। इन चेस V3 प्लेड बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, और यहां इंटेरोगेटिव है तो यहां भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन ही रहेगा। Does he play chess? Is chess played by me? When you practice a number of sentences of this type, you will be able to change active voice into passive voice easily. Next is we are taking simple past tense. As you know, we use V2, second form of verb, in case of simple past statements, and did plus V1 is used in case of negative or interrogative sentences of simple past tense. So, while changing active voice into passive voice of simple past tense, we shall use was, were plus V3 by agent. All the rules will remain same. Only helping verbs will change. You have to keep in mind which helping verbs should be used in which tense. Now let us take a few examples of simple past tense. They watched a movie. Subject यहां पर V2 है. It means it is simple past tense statement and a movie is an object. We have to change this object into the subject of new statement, new sentence, passive voice. A movie, now being a singular subject, because it has become our new subject, so we shall use was. A movie was, यहां पर अगर movies होता तो यहां movies were हो जाता. A movie was V3 watched by एजेंट दे को हम ऑब्जेक्टिव केस में them लिख देंगे. A movie was watched by them. Let us take a negative sentence. She did not follow the rules. Again, subject she, did not follow verb, and the rules is an object. The rules, because the rules is plural in number, so we shall use were, and not will remain there after helping verb. The rules were not followed by she को her में चेंज कर देंगे by her. Next is future simple tense or simple future tense. In case of simple future tense, we shall use shall, will plus V1, and while changing it into passive voice, we shall use be after shall and will plus V3 by and as it. Let us take a few examples and try to understand how to change active voice of simple future tense into passive voice. The coach will guide the players. यहां पर the coach subject है, will helping verb of simple future tense, V1 guide. The coach will guide the players object. इस ऑब्जेक्ट को हम नए सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे the players, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप इज देयर. द प्लेयर्स विल बी, हम अपनी तरफ से पैसिव वॉइस में केवल बी का यूज करेंगे, और गाइड को हम V3 में चेंज कर देंगे, गाइडेड बाय अपने तरफ से लगाएंगे. एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, एजेंट बना देंगे, बाय द कोच. द प्लेयर्स विल बी गाइडेड बाय द कोच. नेक्स्ट सेंटेंस इज will the principal read the report? This is interrogative sentence of simple future tense, will plus V1. Will the principal read the report? Now we will keep it into interrogative. We will not change it into statement as we have discussed already. Will the report, will the report object को आगे ले आएंगे. Will the report be read? बी अपनी तरफ से लगाया हमने, रेड. रीड यहां V1 था, यहां पर रेड V3 लगा दिया. बी रेड बाय द प्रिंसिपल.
In this way, we can change active voice of present, past and future simple tense into passive voice. आइए अब हम सीखते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. बेसिक रूल्स विल रिमेन द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट. यूज द प्रपोजिशन टू कनेक्ट द ऑब्जेक्ट, use helping verb according to the tense and change the verb into past participle form. First of all, present continuous tense is MR plus V1 ing. In case of ing, in all the continuous tenses, we use being after the helping verb in case of passive voice. Being plus past participle. यहां पर भी ing है, यहां पर भी ing है, यही आपको ध्यान रखना है. बीइंग केवल कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय यूज किया जाता है. इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 बाय एन एजेंट. जिस प्रकार से he is learning English, this is a present continuous tense, an affirmative sentence. He is learning English. Here he is the subject, English is the object. Interchange the position of subject and object. English, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हम इसके लिए is यूज करेंगे. is, और चूंकि यहां ing है तो यहां ing वाली फॉर्म being ही यूज करेंगे. English is being learned को हम V3 में पास्ट पार्टिसिपल में learnt में चेंज कर देंगे. by ही को ऑब्जेक्टिव केस में हिम बना देंगे. इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय हिम. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. इज, फॉर एग्जांपल, आर दे टेकिंग लंच, आर दे टेकिंग लंच, आर दे हैविंग लंच. इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ being an interrogative in active voice, keep it interrogative as well in passive form. Is lunch being taken by them? क्या किया हमने? लंच को यहां सब्जेक्ट बना दिया, इस ऑब्जेक्ट को लंच. लंच सिंगुलर था. इज को चूंकि ये इंटरोगेटिव है पहले रख दिया हेल्पिंग वर्ब को. इज लंच, बीइंग लगा दिया अपनी तरफ से ing. बीइंग, टेक को हमने पास्ट पार्टिसिपल में टेकन में चेंज कर दिया. बीइंग टेकन, बाय को यूज करके सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस को एक्यूजेटिव केस में देम बना दिया, दे से. इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं. आइए अब हम एग्जांपल लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का. यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. was, were plus V1 ing. Was, were plus V1 ing. In case of passive voice, nothing will change. Use being plus V3 after was and were, depending upon the new subject. Was, were plus being plus V3 as we have done in present continuous tense. The difference is only of helping verbs. Is, am, are the helping verbs of present continuous tense. Was, were are the helping verbs of past continuous tense. So use being plus past participle in both types of tenses and sentences while changing into passive form. Let us take a few examples. First of all, were they flying kites? This is an interrogative sentence of past continuous tense. So keep it interrogative in passive also. Kites is the object, they is the subject, flying is the verb, which tells us the tense, past continuous tense, interrogative. Kites को यहां हम सब्जेक्ट बना देंगे. अब चूंकि kites प्लूरल है इसके लिए हम was और were में से क्या यूज करेंगे? were. और कहां यूज करेंगे? Before the subject, because the sentence is interrogative one. Were kites being, fly का past participle form flown by them.
they को them में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से were kites being flown by them. Let us take one more sentence. Food was not being cooked by her. This is negative sentence of past continuous tense. Here she was not cooking food. Food is the object, she is the subject. Was not cooking tells us the type of tense, past continuous tense, negative sentence. We shall keep it negative in case of passive form also. Now change the position of food and she in passive form. Food being singular, we shall use was. Food was not, we shall keep not here. Between helping verb and being, food was not being, cook का past participle cooked by she को हम her में change कर देंगे. Food was not being cooked by her. In this way we can change active voice sentences of continuous tense into passive voice sentences. Now next is future continuous tense. You are very well known to the structure of future continuous tense. Shall, will plus be, V1 ing. In case of active voice, we have already used be after helping verbs shall and will and before V1 ing. Now what is there to add in case of passive voice? क्या add करें अब? We can't add anything. So we can't change active voice sentences of future continuous tense into passive voice because we have nothing to add after helping verb while changing them into passive voice. Let us take an example. I shall be doing my homework. This is future continuous tense. Now be is already used between verb and helping verb. So nothing is there to be used to change it into, to transform it into passive voice. So we can't change active voice of future continuous tense into passive voice.